नमस्कार वेलकम टू श्रीकाया एकेडमी। लास्ट क्लास रे आमे क्लास 5 रो एनवायरमेंटल स्टडीज रो सुपर सेंसेस रो किछिटा पार्ट पढ़िथिले। तो तार देहरे आमे विभिन्न प्रकार सेंसेस एंड को स्मेल क्या भल लगे किए किपरि रिएक्ट करे, कोटा आमको गुड स्मेल लगे कोटा आमको बैड स्मेल लगे, तापर कहार आईज रो केते डिस्टेंस पर्यंत किए देखि पारे से विषय पढ़िथिले। किपरि एनिमल्स माने सेंसेस रो हेल्प रे रिएक्शन दियंती से विषय मध्ये आमे पढ़िथिले। एबे चलंतु नेक्स्ट पार्ट को आमे जिबा। नेक्स्ट पार्ट रे लिखा है राइट द नेम ऑफ ए बर्ड व्हिच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन्स। सो गोटे पक्षीर ना आम कह जार आखिटा ह्यूमन मान भाया तार हेड रे थी डायरेक्टली। तो एमती गोटे पक्षी हो तार ना हूँ आउल। सो पक्षीटर ना कौन? पक्षीटर ना हूँ आउल, OWL आउल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन is write the names of some birds which have eyes on either side of the head. So either side of the head maximum पकंगर either side of the head eyes थाए जेमती कि pigeon, parrot, sparrow एमानकर सबु either side of the head रे eyes थाए। The next question, what is the size of their eyes as compared to the size of their head? हाँ तो सेमानकर आखिर साइजटा से हेड्र साइज टू छोट थाए। ओबियसली आखिर साइज हेड्र साइज छोट हेले ही सेटा हेड्रे फिट हो पार, बड़ हेले तो हेड्रे फिट हो पार ना। सो तो देयर साइज ऑफ देयर आईज आर लेस दैन और स्मॉलर दैन द साइज ऑफ देयर हेड। देन नेक्स्ट रे आमे देखिबा मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. Okay, so it से कहला they most of the birds मानक आखि कौन थे either side of the head थे, so their eyes can focus on two different things at a time. तो दीटा different जिनस से माने at a time देखि पारंती। बट जब तेबेले से माने सामना को देखंती straight देखंती both of their eyes focus on the same object। तो same object रे both of their eyes focus करते। then next देखिबा You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? आम देखीचे कि पक्षी मैंने मुंड को फ्रिक्वेंटली बुलाती कहीं बुलाती कहीं जेहेतु आखिटा बोथ साइड ऑफ द हेड थाए से सबू जिनिस देखिपारती ना। तो से नेक मुवमेंट करने पड़े सो दैट से आग पछ ऊपर नीचे जहाँ सब जिन अच्छे से सबको देखिपारे। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। किछिटा बर्ड्स आईज गुड़ाक फिक्स थाए। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज गुड़ा फिक्स थाए, आखि से बुले पारती ना। तो से कौन करती दे सी द सराउंडिंग बाय मूविंग देयर नेक। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। सो से मुंडर नेक टाक बुले से चारिआड़ सराउंडिंग को देखी था। तो नेक्स्ट देखा लुकिंग विथ वन और बोथ द आईज। Close your right eye or cover it with your hand. Tell your friends to stand to your right at some distance and ask him to do some action. Wave hand, shake head, etc. Could you see your friend's action without moving your neck? So से कही कि आमर जो दुईटी आखि हो राइट आखि टी आम कवर करदे बंद करदे। सो आम सांग को कहवा कि आम डाहाण पटे आसिक ठिया हे। तो आम बर्तमान तो क्वेश्चन हो जदि से किसी कला आम से देखिपर कि विदाउट मूविंग आवर नेक। तो आंसर हो नो, बिकज आमको दुईटा आखि दि जाए सो दैट आम वाइड एरिया देखिपर। जदि आम गोटे आखि की कवर करदे तो राइट सैड्रे होता जिनिस को देखापी आमको नेक को बुलेवाई पड़ो सो दैट आम लेफ्ट आई रे राइट रे होता जिनिस को देखिपर। सो द आंसर हो यू हैव टू मूव योर नेक टू सी व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग इन योर राइट। Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. Now try to look at your friend's action with both your eyes. से आखिर पट्टी बाहर कर दे, आखिर हाथ बाहर कर दे, both of the eyes लेफ्ट आई और राइट आई यूज करके try to see without moving your neck what your friend is doing. जदि आम आखिर फ्रंट रे से किसी करुवे then we can see it. जदि आम बैक साइड रे से किसी करुवे then we have to move our neck to see it. What was the difference on looking with one or both eyes? The difference is that in one eye we can see some things and using both the eyes we can see wider range of things.
Now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try with this both your eyes open, then close one eye and try to catch it. से कौन कौन now toss a small ball or a coin and try to catch it. तो toss कर दबा गोटे small coin or ball. तापर देखिए try this with both your eyes open. Then close one eye and try to catch it. Then what is easier to catch? So when it is easier to catch, so easier to catch ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଖିରେ बोथ तो आईज यूज करके जितेबाला आम यहाँ धरवाई चेष्टा करवा से यहाँ आमको इजी हम कहीं आम बोथ आईज रे वाइडर रेंज बा अधिक दूरता पर्यंत देखिपारू. तब नेक्स्ट क्वेश्चन पचार इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर इयर्स. व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन व्हिच यू कैन नॉट डू नाउ. जदि आम आखिटा आम कान जगह था कौन होता तो आम फ्रंटर जिनस देखापी आमको असुविधा हो जाता आम सामने जो जिनस अच्छे से जिनटा को आम देखिपार ना कि कान दीटा आम हेड्र सैड्रे अच्छी केवल आम लेफ्ट सैड्रे कौन होमें गोटे थरक देखिपार था लेफ्ट आई यूज करके आ राइट सैड्रे कौन होमें गोटे थरक देखिपार था राइट आई यूज करके किंतु आट ए टाइम लेफ्ट आउ राइट आई यूज कर लेफ्ट आई और राइट आई यूज करके आम फ्रंट रे कौन हो जिनटा को देखिपारी न था. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट आईज आम जो जगह अच्छी हेड्र से जगह रहा उचित. जदि इयर जगह आई रही था आम फ्रंट रे थिबा जिनस को देखिपारी न था आ लेफ्ट आई को ओनली लेफ्ट रे थिबा जिनस को एवं राइट आई को ओनली राइट रे थिबा जिनस को आम देखिपारी था वाइड रेंज रो जिनस को आम कवर करि पारि न था. सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव. Next question. Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. So these birds can see things from a distance of 8 meters but we can see from a distance of 2 meters. So कौन है जी जो थांती आमर चिल्ल सागुणा वगैरह जो थांती से माने बहुत उच्चर लाइक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड डिस्टेंस से मैंने देखिपारे कौटी रुटी पड़ी कौटी खाଇବା पड़ी कौटी माछ पड़ी से देखिपारती. सो तांकर आईज रो कैपेसिटी आमठू 4 टाइम्स अधिका बोली ये लिखा जाए जो ऑलरेडी लिखिदी हाउ मेनी टाइम्स दे कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन. सो आमे जी देखो तार 4 गुणा अधिका जिनस से देखिपारती. These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meters. So next likhiba. Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? So minimum amaro eta kete habo 1 or 2 kilometer around एतिकी ता minimum approx आपण लिखि परिबे approx एतिकी से माने डिस्टेंस रो से माने देखि पारंती 1 kilometer or 2 kilometer अप्रॉक्स एतिक डिस्टेंस रो ईगल वल्चर वगैरह तांकर खाइबा देखि पारंती. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू एनिमल्स सी कलर्स. Animals cannot see as many colors as we can. See how things in these pictures will be seen by some animals. तो से देखि देला कि सब जगह कलर्स एनिमल्स माने को देखा जाए आमको जेमती 7 कलर्स ऑफ रेनबो देखा जाए सेमिति सब कलर गुड़ाक एनिमल मान को देखा जाए ना किसी जिनस को अलग प्रकार देखा जाए. ओके. सो एनिमल्स कैनॉट सी मेनी कलर्स. पिक्चर ऑलरेडी लिखिदी पक्षी को केमती देखा जाए पशु को केमती देखा जाए किछिटा फ्लावर से आम ये पिक्चर रे देखिले इन दिस पिक्चर से ऑलरेडी देखी दीजिए. तो ह्यूमन को केमती दिसे बर्ड को केमती दिसे डॉग को केमती दिसे एंड लिजर्ड वगैरह को केमती दिसे ये एग्जांपल लिखी. Next लिखी it is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white color. So ये कहला कि जो animals माने दिन टाइम रे अनै थांती अवेक थांती से माने किछिटा कलर देखि पारंती बट जो एनिमल माने ओनली राति रे ही अनांती से माने केवल ब्लैक एंड व्हाइट रो कलर गुडी का देखि पारंती. सो नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट लिखी शार्प ईयर. So in previous classes, you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers. तो आम पक्षी मानकर कानटा भल कि देखी पारुन कहीं सेटा पर द्वारा घोड़े हो जाता है. तो नेक्स्ट लिखा the names of 10 animals whose ears can be seen. So 10 animals आम लिखिदेवा कौन कौन लिखिदेवा dog, cat, cow, elephant, lion, rabbit,
dog, cat, cow, elephant, rabbit, lion, tiger, एक्सेट्रा एमानकर कान गुड़ाक आमको देखा जाए अदर एनिमल्स आपण मैंने लिखिदे पारे सो नेम ऑफ द 10 एनिमल्स हुज इयर्स कैन बी सीन बहुत सारा एनिमल्स अच्छा जो मानकर कान गुड़ाक देखा जाए गोट हो पार हॉर्स हो पार बियर हो पार सो एरा होगा 10 एनिमल्स जो मानकर कान देखा जाए द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज इयर्स आर बिगर देन आवर इयर्स तो बहुत सारा एनिमल्स अच्छे जो मानकर कान गुड़ाक आम कान ठू बड़ जमीक एलिफेंटर कान बड़ डगर कान बड़ रैबिटर कान बड़ एमानकर सब कान बड़ होता है तो से कान आम कान ठू बड़ होता है सो थिंक इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ द एनिमल्स इयर्स एंड देयर हियरिंग देन द आंसर इज येस बिकज जी बड़ कान होता शुणवे से अधिक सुविधा हुए और से भल भाव शुणी पारती सो द नेक्स्ट थिंग फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before. In which case was the sound sharper? Ask your friends too. Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? Then से कहला कि कान पछपटे आम कान देले तो वॉइसटा सफ्टली कहले भी आमको टे भलरे क्लीयरली शुणा जाए तो ये कही कि बिगर कान जो मैंने करते हैं से भलसे शुणी पारते नेक्स्ट कही कि पुट योर हैंड्स ओवर योर इयर्स एंड से समथिंग कैन यू हियर योर ओन वॉइस देन द आंसर इज यस जो मैंने सिंगर्स था से कान हाथ दे गीत बोलती कहीं सराउंडिंग नॉइसटा को कम करदेवाई चेष्टा करती सो आम निज हाथ जदि निज कान दबा से समथिंग कहवा देन आम आम निजर वॉइस को शुणी पार सिट नियर ए डेस्क एंड टैप द डेस्क वन्स विथ योर हैंड लिसन केयरफुली नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर एंड टैप ऑन द डेस्क वन्स अगेन विथ योर हैंड एंड लिसन अगेन वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप बेले आम कौन देखा खाली रे बेंच बाड़ी आम जहाँ शुणी पार टेबुल बाड़ी आम जहाँ शुणा जी रेंजर साउंड आम शुणी पार्थिले जितेबाला आम कानटा ही टेबुल उपर देदेबा ताहले से साउंडटा अधिक जोरे लाउडली आमको शुणा जाए सो एटा होची ए एक्सपेरिमेंटर आउटपुट सो व्हाट इज द आउटपुट कि कानटा आम जितेबाला देदेबा एटा अधिक आमको शार्पर और अधिक लाउड शुणा जिवो This is how snakes hear. They do not have external ears which you can see. They only feel the vibrations on the ground. The साप मानकर कौन थाए स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल इयर्स तांकर आम भाया एक्सटर्नल इयर्स न था तो से केमी जानती भाइब्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड को भी साउंड प्रोड्यूस हुए सेटा गोटे भाइब्रेशन क्रिएट करे इन आवर सराउंडिंग एंड से भाइब्रेशन हेल्प रे जिनिस सब जानती से कान न थाए ओके तो नेक्स्ट देखा आम कौन लिखाई Sounds send messages. High up on a tree, a langur warns others dangers. Others of high up on a tree, a langur warns others of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. तो आमे देखी जे मांकड़ मैंने केवे केवे अजीब अजीब साउंड करती जितेबाला कौन विपद सूचना से पाती अन्य मांकड़ पाखे से सूचना पहुँचाई से वार्निंग कॉल दियंती बा विभिन्न प्रकार साउंड डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड से बाहर करते तो कह जाए वार्निंग कॉल बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स to warn about the dangers. Some birds even have different sounds for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. तो कौन हुए birds माने different sound बाहर करते जदि हमारा सराउंडिंग रे enemies थांती so different birds of animals मानकर different sound था different situation पाए नेक्स्ट लिखी फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तो पानी रे से मैंने कौन कहते कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तांकर से कैपेसिटी थाए से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हेल्प रे अन्य फिश मान को अलार्म कॉल दे थांती फॉर एनी काइंड ऑफ अपकमिंग डेंजर्स Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come.
People who live in the forest and can observe such behaviors of the animals come to know of the danger. So देखिथिबा जेतेबेले सुनामी वगैरह आसे पानी रे माछ मानकर बिहेवियर चेंज हो जाए, पानी रे रहउतबा जीव मानकर बिहेवियर चेंज हो जाए, बात्या टाइम रे पक्षी मानकर बिहेवियर चेंज हो जाए. सो से माने सिचुएशन टाको जानि पारंती, अपकमिंग डेंजर टाको देखि पारंती. In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the islands were hit by the tsunami, but these people were saved. So, से लिखला जमी मुझे कहली सुनामी बेले माछ मैंने अन्य प्रकार बिहेव करते, तो सेमती गोटे बिहेव कलापर से जानीपारे कि किसी गोटे डेंजर आसो तो निजी को सेफ करदे. यहाँ घटनाटी घटी अंडमान आइलैंड. देन नेक्स्ट देखा, dolphins also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. So dolphins मानक भी साउंड था, स्पेशल लैंग्वेज से माने यूज करती निज निज भितर कम्युनिकेट करने. Can you understand the sounds of some animals? Which animals? We can understand the sound of some pet animals or the animals with whom we are acquainted. So जमती कि आमर कैट, डॉग वगैरह, रैबिट वगैरह घर जो मैंने रखती, पैरट्स वगैरह घर जो मैंने रखती, से मानकर साउंड को रिकग्नाइज करि पारंती. Do some animals understand your language? Which ones? Yes, parrots, cat, dog, they can understand our language. देन आज ये क्लास टी सुपर सेंसेस तार नेक्स्ट पार्ट आम नेक्स्ट चैप्टर रे पढ़िबा, नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा. सुपर सेंसेस रो नेक्स्ट पार्ट पढ़िबा आमर चैनल श्रीकाय एकेडमी को सब्सक्राइब करंतु. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल श्रीकाय एकेडमी. यार नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज आम नेक्स्ट पार्ट रे, नेक्स्ट पार्ट आमर वीडियो रे पढ़िबा. श्रीकाय एकेडमी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करने कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे. वी प्रोवाइड क्लासेस फॉर सीबीएसई, आईसीएसई, ओडिया मीडियम स्टूडेंट्स क्लास 1 to class 10, and we provide classes for all subjects: math, science, English, social science, Hindi or Sanskrit, including English and spoken English classes. Our location: न्यू एजी कॉलोनी, पोखरीपुट, भुवनेश्वर. श्रीकाय एकेडमी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करने एवं बेस्ट एजुकेशनल एक्सपीरियंस पाइबा कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल श्रीकाय एकेडमी.